now we are moving towards the next session or the next presenter, and that is Professor H.N. Mishra. He is professor retired from University of Allahabad, Prayagraj, UP. He is going to speak on contemporary developments in geography. He is a well-known geographer in India. I'll just give a little bit introduction before inviting him. He is a master's and MPhil, and then he got the senior fellow of ICSSR, New Delhi, then emeritus fellow, University Grants Commission, then Commonwealth Academic Staff Fellow, Cambridge University, UK in 1988-89, then Senior Fulbright Fellow, University of Pittsburgh, USA in 1976-77. He is having a vast teaching experience of more than 4 decades, having specialization in rural and urban development planning, environment and sustainable development, and principles of spatial techniques. He has supervised 7 PhDs and 5 MPhil dissertations, and he was the president of Indian Institute of Geographers in 2017, president of NAGI in 2014, then editor of Annals NAGI in India, then visiting professor, Calcutta University in 1999, member of editorial board, Progress in Human Geography, an international journal of geography published in UK, chairman, Commission on Urban Ecology, National Association of Geographers of India from 1992 to 97, then chairman, Commission on Urban Development and Management, again NAGI 1988 to 2004, book review editor of Pariyojana, an international journal of planning and policy science, 1979 to 1987, then founder editor of Analytical Geography, Indian Geographers Association, 1976. Then he has done field work in various countries like USA, UK, Japan, China, Egypt, Bhutan, Sudan, Nigeria, Benin, Italy, Holland, Thailand, Argentina, Brazil, and so on. He has written 6 books and more than 72 articles in various journals of national and international repute. We are very happy to have you here, sir. Board is yours. Okay, so I start my lecture with invocation. Ano bhadraha kato yantu vishwato adabdhas aparitas udvida devano yatha sadmadbadhe asanna prayo rakshitaro dive dive. Ladies and gentlemen, very dear students, I am really beholden to Professor Soni for having given me this great opportunity of interacting with a host of the scholars as well as the students this morning as well as this afternoon. I thought that I should project across to you some of my ideas pertaining to geography and the changes that have been taking place in the thematic content of geography over a period of time. With this focus in mind, I would say, Soni, can you hear me? Sir, I am very much hearing you. If you will be bilingual, that will be more fine for us. अच्छा, ठीक है, दोनों करेंगे. ठीक है, sir. So, I would say that geography was born with the birth of man on earth. पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही भूगोल की भी उत्पत्ति हुई है. और क्योंकि जैसे मनुष्य पैदा होता है, तो the first thing that he encounters is the environment. And therefore I say that geography is the oldest form of intellectual inquiry, goaded with the desire of human well-being and development. Vedas, which happen to be the oldest library of the human mind, they very clearly and categorically say, Om Dev Santi Antiriksham Santi Prithvi Santi Apah Santo Sadhaya Santi Banaspataya Santi. All these elements, sky, earth, forest, everything has been mentioned, and that amply demonstrates
कि भूगोल का हमारे जीवन में हम अनादिकाल से, जब से मनुष्य धरातल पर आया तब से कितना महत्व रहा है। मित्रों, मैं थॉमस उनविन, एक बहुत बड़े ज्योग्राफर हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उन्होंने कहा है कि ज्योग्राफी इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस, इट इज मदर ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी and other physical sciences, and also parent to history and economics. Without the clear grounding in the known characteristics of the earth, the physical sciences are merely game playing and social sciences only ideology. इसके माने होता है कि भूगोल समस्त विषयों की माता पिता के रूप में है। यदि धरातल की कैरेक्टरिस्टिक्स को बिना जाने हुए कोई भी विज्ञान आगे बढ़ता है तो इसके माने वो गेम प्ले कर रहा है और एक विचारधारा से जुड़ा हुआ है, वो धरातल से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए उसका ज्ञान जो है वो अधूरा और अल्पज्ञ है। I hope I am clear. The next point that I wanted to say is this. The reason I thought, why should I this morning project across to you about the importance of geography is this, because most of the problems that you see in the world today, all the contemporary challenges, समसामयिक जितनी भी चुनौतियां हैं, समस्त चुनौतियां, they are very geographic because most of them are at the threshold of human activities and natural environment. जितनी भी चुनौतियां आप वर्तमान में देख रहे हैं वो मानव क्रिया, जब मानव की क्रियाएं और पर्यावरणीय परिदृश्य के इंटरेक्शन से उद्भूत हुई। इज इट क्लियर? जित मानवीय क्रिया ने इतना पर्यावरण में प्रवेश किया है कि उससे समस्याएं, all the problems, for example, climate change, natural disaster, variety of other fallouts that we see today, they are simply because man has been too much trying to infringe into the natural environment. And therefore, the importance of geography becomes much more imperative in the contemporary context. वर्तमान संदर्भों में इसलिए भूगोल का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। मित्रों, लोग कहते हैं कि globalization has made the world borderless. There is no border as far as the globalization is concerned. वैश्वीकरण ने विश्व में सीमाओं को नष्ट कर दिया है। I disagree. मैं इससे बिल्कुल, क्योंकि in spite of the fact that globalization has made the world borderless, the spatiality does remain. The importance of the place still exists, which means if there is a spatiality, that means geography is still playing a very dominant role. Friends, geography has had a very long history, as I said in the beginning, but it was developing as a part of the integrated branch of knowledge. There was no geography, history, physics, chemistry like that. It was an integrated science that was developing in our country. But for the facilities of the human mind, we made a division that this is geography, this is history, sociology, physical sciences, biosciences, and humanities, social sciences, etc. Nevertheless, ever since geography was coined by Eratosthenes in 3rd century BC, geography has gone a sea change. It has traveled a very long distance from myth to map, from map to geospatial technology, and from geospatial technology to visualization. माने कि ज्योग्राफी शब्द को सर्वप्रथम इराटोस्थनीज ने 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास जब इसे क्वाइन किया था,
तब से आज तक में लगभग 2000 सालों में भूगोल बड़े लंबे रास्ते तय किए, फ्रॉम मिथ टू मैप्स and from maps to the geospatial technology and visualization. So, geography in the beginning was thought to be fabulous, a thing of imagination. Geography then became the military geography. It was more relevant to know the latitude and longitude for the purposes of war. Then geography became the victorious geography. When the colonies were formed, the British colonies, the French colonies, different colonies came on the surface of the earth in different parts of the world. And then we came to the next era, the contemporary, that is geography of globalization. So from victory to globalization. But over a period of time, say in 2000 years, lot of ideas, विभिन्न प्रकार के विचार आते रहे. Because of the accumulation of the ideas, there has been tension among the ideas. Because of the tension among the ideas, there has been crisis among the ideas. Because of the crisis among the ideas, there has been revolution among the ideas. And because of the revolution among the ideas, there has been emergence of the paradigm. ढेर सारे विचार 2000 वर्षों में आए. इन 2000 वर्षों में तमाम विचारों के संग्रह से विचारों में तनाव उत्पन्न हुआ और तनाव से एक वैचारिक संकट उत्पन्न हुआ. वैचारिक संकट से एक आंदोलन को जन्म मिला और आंदोलन से अथवा क्रांति से एक विशिष्ट प्रकार के पैराडाइम का उद्भव हुआ. ये पैराडाइम is virtually a word which was coined in 1972 by a very famous physicist called Thomas Kuhn. Or the three things which form the important gradient of paradigm are epistemology, ontology, and methodology. Epistemology means philosophy, ontology means theory, and methodology means methods and techniques combined together. So all the three combined together make paradigm. Friends, paradigms are accumulation of ideas, but a particular point of time, किसी समय विशेष में एक विचार महत्वपूर्ण हो जाता है, किसी और समय दूसरा विचार महत्वपूर्ण हो जाता है. इस तरह से दो प्रकार के पैराडाइम का समुद्भव हुआ. एक ट्रेडिशनल पैराडाइम कहलाते हैं और दूसरे कंटेम्पररी पैराडाइम कहलाते हैं. ट्रेडिशनल पैराडाइम्स आर दोज which were operating prior to Second World War, and contemporary paradigms are those which started operating after Second World War. मैं Second World War को इसलिए महत्व दे रहा हूं क्योंकि दुनिया में तमाम सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल चेंजेस आए और उनका जो डिस्टिंक्ट इम्प्रिंट हुआ वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ. इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले के जो पैराडाइम्स हैं दे आर नोन एज ट्रेडिशनल, परंपरागत, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद के जो है वो कंटेम्परेरी माने सम. सो ट्रेडिशनल पैराडाइम्स एंड कंटेम्परेरी पैराडाइम. द ज्योग्राफी फर्स्ट began with the environmentalism or to what we call determinism. और उसके पहले टेलियोलॉजिकल, धार्मिक और पृथ्वी ऐसे बनी है वैसे बनी है, दैट इज कॉल्ड टेलियोलॉजिकल पैराडाइम. लेकिन इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से हम ज्योग्राफी की शुरुआत मानते हैं. और लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ प्रोसेस, स्ट्रक्चर एंड स्टेज जो विलियम डब्ल्यू मॉरिस ने 1905 में, जो हुआ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द Annals of the Association of American Geographers, उन्होंने ये प्रोपोगेट किया. सब्सिक्वेंटली रेटजल ने और एलन चर्चिल ने, इन लोगों ने प्रमोट करने की कोशिश की. इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म
possibilism, जिसे संभववाद कहते हैं, then suddenly on the scene came a very important, very dynamic geographer, Richard Hartshorne. And by being the editor of the Annals of the Association of American Geographers for a long period of time, he was able to set the new tone into the realm of geography. And he came with the idea of regionalism, that there are regional variations, that there are one part is different from the other part. So regionalism became the most powerful paradigm of those times in 1930s. And this book, which is called Nature of Geography, that became the, just like the Gita, Ramayana, and this Bible or some other religious books, that if you want to claim yourself to be a geographer, you must have read Richard Hartshorne's Nature of Geography. So much so कि तत्कालीन विद्यार्थी अपने तकिया के नीचे रिचर्ड हार्टशोन की किताब नेचर ऑफ ज्योग्राफी लेकर सोते थे, क्योंकि यदि कोई समस्या भूगोल की होगी तो उसका समाधान उस पुस्तक में होगा। वो है ना कि मेरे यार की तस्वीर मेरे सीने में है, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। अगर कोई भी समस्या भूगोल से संबंधित है तो रिचर्ड हार्टशोन की किताब नेचर ऑफ ज्योग्राफी देखो, इतनी पॉपुलर। लेकिन आप तो जानते हैं कि सबकी पॉपुलैरिटी एक सीमा पर समाप्त हो जाती है, और उसी तरह नेचर ऑफ ज्योग्राफी को क्वेश्चन करने के लिए धीरे धीरे लोग उठना शुरू हुए। और उसके बाद कल्चरिज्म थोड़ा सा आया, थोड़े समय के लिए, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर ने सबको धराशायी कर दिया। नई थिंकिंग, इकोनॉमिक थियरी, सोशल थियरी, पॉलिटिकल थियरी, cultural theory, all the theories were set at naught, and a new idea started emerging. And with the new idea, emergence of the new ideas, new paradigm started emerging. और इस बीच में एफ के सेफर नाम का व्यक्ति, जो बहुत दिनों से तड़प रहा था और रिचर्ड हार्टशोन को निरंतर फाइट देने में लगा हुआ था, वह सीन पर आया और उसने, उसके परिश्रम से एक नए पैराडाइम की शुरुआत हुई, जिसे स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन अथवा पॉजिटिविज्म के नाम से जाना जाता है। पॉजिटिविज्म, which was, there was more emphasis on quantification. Every part of the earth can be measured, each and every segment should be measured, and it should not be hearsay, it should be a quantitative expression. So many people, lot of American geographers, British geographers, they started promoting the idea of quantification into geographic analysis, and thus the positivism, which was a philosophy propounded by Vienna Circle of Geographers, that became the basis. And the basis was that the whole is always greater than its pieces. Any big thing, if you cut into pieces, then the pieces will become smaller after joining, will never be the same WHOLE, whole. So that was the philosophy. And लेकिन सब बंदे का एक दिन होता है, और ये चूंकि ज्यादा समय नहीं होगा, इसलिए इस पर तो मैं कई दिन भाषण दूंगा पॉजिटिविज्म पर, बड़ा लंबा लेक्चर देना चाहिए, लेकिन मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि ये जितने भी फैक्टर एनालिसिस, प्रिंसिपल कंपोनेंट, रिग्रेशन एनालिसिस, मल्टीवाइरिएट एनालिसिस, categorical Q mode analysis, all these came into play because of the positivism and because of the
quantitative revolution that took place in geography in 1960s. Friends, lekin after some time, a group of geographers started emerging, which said that, hey, this has nothing to do with the human welfare, social welfare, and we have to look into how people get benefits, how poverty is removed, how inequality disappears, and how regional variations are squeezed. With this mission, another approach started, that was social welfare approach, which is called broadly, that started playing a very important role, and thus Marxism became a very dominant factor, and the welfare development, human development, that became the most powerful paradigm of the time, friends. But this paradigm again was challenged, and a lot of people started saying that what we are discussing is only just one part, the upper part. And then, therefore, the paradigm called structuralism. Structuralism means if you want to explain the origin of the Himalayas, you must explain the plains. If you want to explain the plain, you must explain the Himalayas. They are interrelated, interwoven, and you cannot classify them. You cannot study them separately. You have to study them together. And because if you see Professor Soni, this part of the hand, this part of the palm, then you must know this part also. That is called structuralism. Unless you know the structure of this, you will not know the structure of this, or you will not understand this if you do not understand this. Means if you want to understand mountain, you must understand plain. If you want to understand plain, you must understand the mountain. Well, this is one small example I'm giving. Likewise, so everywhere you have to see the other side of the coin as well. Don't be straight. You have to be very penetrating. You have to be having deep, intensive ideas to understand the varied character of the surface of the earth. That became the focus. And structuralism led to a very dominant paradigm, which is called the postmodernism. Postmodernism, Uttar Adhunikbad, which says all the meta-narratives, all the theories, all the foundations are redundant, meaningless, and have no. वो कहता है कि बड़े बड़े विचार, बड़े बड़े सिद्धांत, बड़े बड़े जो वैचारिक सिद्धांतों की नींव है, वो सब अनफाउंडेड। क्यों? क्यों कहता है कि there is a need for deep mapping and thick description. Deep mapping and thick, माने बहुत अंदर तक जाना है। अगर वो कहते हैं ना कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, और जिसको भी देखिए कई बार देखिए। जब तक खूब अंदर से हम सोनी को या एच.एन. मिश्रा को नहीं देखेंगे, एच.एन. मिश्रा कितना चिरकुट है अथवा सोनी कितने अच्छे हैं, इस बात को समझने के लिए बहुत गहराई से ऑब्जर्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। एंड देयरफॉर देयर इज अ ग्रेटर एम्फेसिस on micro analysis. Small is beautiful. That is the basic philosophy of not big areas, not big regions, not whole India. No. See Rajasthan, part of Rajasthan, Sikar, and within Sikar, part of Sikar, within part of Sikar, sub part of the Sikar. So, kyunki if you do not go into the micro analysis, friend, you will not really understand the real geography. Therefore, this postmodernism emphasizes that there is a need for deep mapping. गहराई से मैप करना, mapping not only
preparing the map. Deep mapping meaning deep understanding of the phenomena. सब लोग जानते हैं कि ट्रेडिशनल नॉलेज हमारा कितना इंपॉर्टेंट था. नीम जो है एंटी फंगल है, हल्दी जो है घाव को कम करती है, लेकिन हमने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में इनको सबको महत्वहीन बना दिया. हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज, हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज, हमारे ट्रेडिशनल इकोसिस्टम, हमारी ट्रेडिशनल परंपरागत लोगों की जो ज्ञान है, उस ज्ञान को भूगोल में समाहित करेंगे, तभी हम भौगोलिक अज्ञान से मुक्ति पाएंगे. इसलिए आवश्यक है कि वी शुड नो द डिटेल्स ऑफ दिस. अच्छा, और एक इंडिविजुअल के लिए बहुत बड़ा रीजन टैकल करना आसान है, लेकिन इंटेंसिव स्टडी कर पाना, पूरे भारत वर्ष का लैंड यूज, पूरे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज वेरी इजी. लेकिन सीकर में क्या है, और सीकर के सब सीकर में, एक तहसील में, एक ब्लॉक में क्या है, इस बात को जानने के लिए बहुत ही गहराई से देखना पड़ेगा. अब हम समझ पाएंगे कि व्हाट आर द रियलिटीज ऑफ द ज्योग्राफी. सो I can again, as I said, that postmodernism by itself, by definition, has very long, several things to say, but only thing to summarize, I will say that बड़ी बड़े जो सिद्धांत हैं, उनका रेलेवेंस, उनकी सार्थकता वर्तमान संदर्भों में समाप्त हो गई है. दूसरी बात, इंडिविजुअल शुड गेट मोर फोकस रादर देन द कम्युनिटी, बिकॉज हर व्यक्ति की जो पीड़ा है, हमारा जो दर्द है, वो दूसरे का दर्द नहीं हो सकता. तो individuality should be respected and micro region should be given more weightage. कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ गड़बड़ हो रहा है तो बताइएगा. सर एब्सोल्युटली फाइन, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा. अच्छा. सो हमको बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझने के लिए डीप मैपिंग, थिक डिस्क्रिप्शन, हम छोटा काम करें. That is a great research instead of taking big areas and making some generalizations. Unless, और ये जो बड़े बड़े सिद्धांत हैं, बड़े बड़े नैरेटिव, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी. इसी से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज बेसिकली मैस्कुलिन कंस्ट्रक्टेड, जो वर्तमान में अधिकांश ज्ञान जो है उसको पुरुषों ने कंस्ट्रक्ट किया है. तो महिलाएं जो है वो पीड़ित हैं, वो समझती हैं कि उनके साथ विमाता का व्यवहार किया जा रहा है, इसीलिए फेमिनिज्म आ गया, इसीलिए इंडिविजुअलिटी बिकेम मोर इम्पोर्टेंट. सो knowledge should be socially constructed instead of being constructed by a particular group, instead of being constructed by the dominant, predominant, powerful group. So this can happen only when we give due attention to the individual, because if we do not do that, we will make generalizations, and generalizations will not be close to the reality. In order to understand, हमारा दर्द समझने के लिए हमारे पास आना होगा, हमारी पीड़ा समझेगी, और geographer has to come forward to understand the individual agony, the individual variation, the individual changes. The small areas should therefore be micro region, should be the goal of study of geographers, rather than. Much can be said about these things. Nevertheless, friends, geography has now been focusing more on several things, particularly most of the challenges that 21st century has been facing. And one of the greatest challenges that 21st century has been facing is the sustainable development, sustainability. That has become really the cause of concern. Friends, sustainability has been the part of the Indian thought process since times immemorial. For a long period of time, we have been trying to preach sustainability.
And that is why we said Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pasyantu, Ma Kaschit Dukh Bhag Bhavet. सभी सुखी हो, सभी आरोग्य हो, सभी प्रसन्न रहे और किसी को कोई दुख न हो. ये सस्टेनेबिलिटी है. हमने ये भी कहा, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या. Earth is our mother and we are all her children. The moment we start associating ourselves, the relationship of mother and children, between the nature and human beings, sustainability will continue flourishing. But over a period of time, unfortunately, we have completely ignored this thesis of Mata Bhumi Putroham Prithibhya, and therefore most of the challenges have come. Friends, in 1962, a book was written, Silent Spring, that said that there will be no more chirping of the bird, there will be no flowers, there will be no vegetation over a period of time if we continue churning the resources the way we have been doing. And this set the tone. Because of this whole range of books, Our Common Future, then Limits to Growth, all these books came, and finally Our Common Future, we said that we should meet the need of the present generation without compromising the needs of the future generation. Which means sustainability has three things. One, that it should be, the development should be intergeneration transferable. It should be, there should be intergeneration transferability. The development should continue from one generation to the next generation. The second is that social equality, irrespective of the caste, creed, sect, society, there are various interpretations, lot of misgivings about the caste, about the society, political infringement that has divided us. And Britishers tried their level best to divide us by saying that, hey, you are Sudra, without understanding. And they said that Sudra is fire. No, fire is most important. Ultimately, पाद पूजा होती है, मुख पूजा कोई नहीं करता. कोई मुंह को प्रणाम नहीं करता, सब प्रणाम करते हैं पैर को. Which means that fire is most important, which means that is the worth appreciating and worth utilizing. लेकिन हमने वो सब बना के सबको अलग करके ताकि हम इकट्ठा होकर के अंग्रेजों के खिलाफ अथवा इन्वेजन के खिलाफ ज्वाइंट फाइट न दे सके, इसलिए हम सब अलग हो गए. बड़ा दर्द है, बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगी गम गुसार चले. मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि हम सब अपने हैं, लेकिन ये फलाने हो गए, ये फलाने हो गए. इस तरह का विभाजन करके हमारे दिमाग में विभाजन कर दिया गया है. And that has been really the one of the major causes for the unsustainable development. The third is that the intergovernment responsible means those who are at the helm of affairs, those who are rich should try to support, the rich nations should support the poor nation. And the crucial part of the sustainable development is the environment. There are two types of environment. One is the natural environment, which is known as declarative environment or incidental environment. We know that there are clouds, there's a rainfall, all these things distinctly visible. But there is another environment, which is a created environment which lives in our mind.
We have our own environment. That is, the cognitive mind has its own word, its own people, its own social relationship. The cultural, social relationships and values that be faster in our mind, that is called built environment. And this built environment is the created environment. So the challenge is to cut across the declarative or natural environment with the built environment in a manner and style, so that the sustainability, which is really the goal of the humanity, should not be disturbed. Friend, with this view, geography becomes therefore most important discipline among all the disciplines, whether maybe physical sciences, social sciences, biosciences, or humanities. Geography is the only discipline which tries to cut across all the disciplines and tries to penetrate deep into the arena of all the disciplines to promote the idea. माने सतत विकास, संवहनी विकास को बढ़ावा, क्योंकि भूगोल स्वभावतया इंटरडिसिप्लिनरी अथवा अंतर अनुशासनिक विषय है, और थोड़ा भूगोल वालों को कहना है इनको कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, ये तो वन के बारे में भी बात करते हैं और आदमी के बारे में भी बात करते हैं, ये तो नेचर के बारे में भी बात करते हैं और सोसाइटी के बारे में भी बात करते हैं। अरे भैया, हम वी आर वर्सेटाइल जीनियस, हम लोग सब चीजों के बारे में बात करते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा हमसे सीखो। और जब तक हमसे तुम नहीं सीखोगे तब तक तुम्हारा जो फिजिक्स में सॉलिड स्टेट फिजिक्स, केमिस्ट्री में फार्मूला लगा रहे हैं वो तरह तरह के, जब तक आदमी को मन को नहीं समझेंगे, जब तक आदमी को नहीं समझेंगे, आदमी के क्रियाकलाप को नहीं समझेंगे, आदमी के इंटरेक्शन को नहीं समझेंगे, आप लिए रहिए फिजिक्स, आप लिए रहिए चांद में जाने की कल्पना, कुछ काम नहीं आएगा। भूगोल ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो सभी को जोड़ने का और लिंक का कार्य करता है, और ऐसी कोई विषय नहीं, सभी सेगमेंटेड है। एक हिस्से को ज्योग्राफी जो है नेचर के बारे में बात करता है, ज्योग्राफी जो है नेचर में के गोद में बैठे हुए ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करता है, और जो इनके दोनों के बारे में बात करता है वही समग्र ज्ञाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दुनिया में सबसे ऊपर हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग संतुलित होकर, संतुलन बनाकर और ऐसा विचार बनाते रहें कि भाई, अरे देखिए सोनी साहब, मैं समस्त बच्चों से बताना चाहता था कि ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जॉन एग्न्यू एक प्रोफेसर हैं, और उनके साथ 12 बच्चों ने मिल करके विश्व के सबसे बड़े टेररिस्ट जिसका नाम ओसामा बिन लादेन का पता लगाया कि पाकिस्तान के अतबाबाद में 200 किलोमीटर की रेंज में किस जगह है, इसका पता लगाने वाला जाग्राफर और 12 स्टूडेंट रहे, जॉन एग्न्यू। मैं रेफरेंस के साथ और मैं अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं कि उन्होंने कैसे जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस और बायोलॉजिकल थियरी का प्रयोग करके उन्होंने पता लगाया कि पाकिस्तान के ओसामाबाद में वो ओसामा बिन लादेन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्योग्राफी हैज ए advantage of cutting edge technology, because we have maps, we have the geospatial technology, we have specialization, so we can monitor, we can manage, and we can plan. Or the monitoring the changes, managing the changes, and planning the changes, all the three things can be done and managed by geography and geographers, and therefore geography has become much more important and plays a very critical role in the contemporary context. Friends, some of the areas which are very so the
the most important areas where geography has to and has been playing the significant, critical, crucial role. One is the human settlement system. आप देखिए जितने भी चेंजेस हैं मित्रों, वो रूरल और अर्बन लैंडस्केप में हो रहे हैं, और अर्बनाइजेशन, massive wave of urbanization has been taking place, and that has been changing the entire fabric, social, economic, cultural, and political fabric of the regions have been changing simply because of the massive wave of urbanization. और ये रूरल एरियाज को भी इन्वेड कर रहा है, प्रभावित कर रहा है. तो ह्यूमन सेटलमेंट सिस्टम को का अध्ययन टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाना चाहिए. दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट डायनामिक्स है, which should be given due importance, is the social components. This is very unfortunate that lot of deviations among ideas. Lot of people have not read महाभारत. महाभारत में एक एपिसोड है कि if somebody commits a crime, then the Sudra will get 1 year's imprisonment, Vaisya will get 2 years imprisonment, Kshatriya will get 4 years imprisonment, and the Brahmin will get 16 years imprisonment or life, death. That is the strict rule. So there has never been discrimination in our Shastras, in our religious books about that the society is divided and they are denigrated, they are lower strata, they are upper strata, they are this, that, all those things. This is all wrong. Over a period of time, our society has been invaded by the wrong ideas, and on account of which we are very fragmented, we are very divided. The role of geographer is to provide synthesis in the society, in the social group, communities. And the third thing that has been over-pervading and has been very important is the economic system. Tremendous change has been changing place from primary to secondary to tertiary to quaternary and so on and so forth. So in this change, because of the changes that have been taking place, the spatial inequality, the regional inequality has become very pronounced. The role of the geographer is to point out the spatial inequality, regional inequality, micro inequality, and focus on mitigating the inequalities, whether they are social, whether they are economic, or they are of any other type. All these inequalities need to be removed. We will not do anything. We will simply give the idea. The role of the intellectual is to provide the ideas. If somebody says, अरे आप geography तो आप क्यों नहीं करते? मैं कहता हूं कि मैं कर रहा हूं. छोटे से छोटी छोटी चीजों को लेकर के और उससे बड़ी चीजें की सकती है. वो कहते हैं ना, एक शेर है बड़ा पॉपुलर कि मेरा पानी उतरते देख, मेरे किनारे पे घर मत बना लेना, मैं विकराल समुद्र हूं, लौट के फिर आऊंगा. माने कि जो सोसाइटी की अनोमलीज, जो इनइक्वालिटीज इकोनॉमिक है, इसको हमको इग्नोर नहीं करना है. जोग्राफर को अटेंशन देना है कि कैसे, किन कारणों से इनइक्वालिटी बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है, और इस असमानता को कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और रीजनल लेवल पर, सब रीजनल लेवल पर हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, माइक्रो, सब माइक्रो, मेसो रीजन पर कैसे कर सकते हैं,
कैसे पॉलिटिकल लेवल पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हमारा काम है लड़ाई करना नहीं, हमारा काम झगड़ा करना नहीं, हमारा काम है कि हम विचार देंगे। और दुनिया के समस्त परिवर्तन जो है विचारों से हुए। अगर विचार हमारे मजबूत हैं तो परिवर्तन हम एक दिन ला के रहेंगे। इसलिए हमको कमजोर नहीं होना है, हमको निराश नहीं होना है, और ज्योग्राफी को निरंतर स्ट्रेंथन मजबूत करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। So human settlement system, social system, economic system, and finally the natural system. Within the natural system, of course, we study physical geography, we study rock, mountain, plain, plateau. It's all very generalized kind of study. You have to be area specific. You have to study a small area, a detailed, intensive, micro level, thick description, deep mapping, without taking into account the meta narratives which are self contradictory. उनको छोड़कर हमको नई ज्योग्राफी बनाने की आवश्यकता है। With this, I would say that geography and geographers have great role to play in so far as the question of sustainability is concerned, because it is the sustainability which has really been over a period of time the cause of concern and has been agitating the human mind. I would say that the present generation of geographer can play very critical and predominantly dominant role in analyzing at the micro level different kinds of anomalies in order to promote the synthetic idea of sustainable development. With this, I would like to say thank to the organizer, particularly Professor Soni and his team, for having given me this great opportunity of interacting with some young minds. Although I am not a very articulated, very organized kind of geographer, I have all random thoughts and random ideas. Nevertheless, they also serve God who only stand and wait. That was the line written by John Milton. And whatever I have said, maybe that it is not important, but it is important, and it will play a very dominant role over a period of time for the development of geography, because then only the real role of the geographers will emerge. With this, I would like to say thank you. And if there is any question, if there is any doubt, I'm open to all kinds of questions, all kinds of it's not a challenge, but with due humility, any question you can ask. Thank you very much. हमें एक यात्रा दी कि किस तरह चिंतन फलकों का बदलाव भूगोल में आया, और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसको कैटेगराइज किया दो भागों में कि विश्व युद्ध द्वितीय से पहले चिंतन फलक किस स्थिति में थे, किस प्रकार के विचार डोमिनेट कर रहे थे, और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस तरह के बदलाव आए। बहुत सुंदर तरीके से आप हमें कंटेम्परेरी इश्यूज के ऊपर ले आए, और आपने बहुत भली भांति तरीके से बताया कि आज के टाइम, आज के समय में भूगोल की दशा और दिशा दोनों कैसी है और कैसी होनी चाहिए। आने वाले समय में हमें किस तरह के शोध प्रोड्यूस करने चाहिए, हमें भूगोल के विकास के लिए किस दिशा में आगे बढ़ने चाहिए। आपको सुनते रहना हमारा सौभाग्य है, लेकिन क्योंकि समय का अभाव है, मैं फिर कभी किसी प्लेटफॉर्म को तलाशूंगा, फिर लंबे समय तक आपके उद्बोधन का इंतजार हम करेंगे और आपको अवश्य सुनेंगे। आपको सुनना सदैव एक बहुत ही खुशी का मौका होता है और विषय को गहराई से जानने का अवसर होता है। Thank you, sir. Thank you very much from the entire organizing team. Thank you. Thank you very much.